विश्व में भारत का स्थान तो है ही, जो जो भी 140 करोड़ लोगों का देश है और अब चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, एटॉमिक वेपन्स हैं, हर तरह से भारत एक बहुत मजबूत देश है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो सोच है, जिस तरह से जी20 भारत प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत में संपन्न हुआ और उसको पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी का विश्व में एक बहुत ऊँचा स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनमें जो प्रगति हुई है, मंदिर परिसरों का विस्तार हुआ है, मंदिर के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। ये तो हैं ही, लेकिन विश्व भर और भारत में योग का जो प्रचार हुआ है इससे हम सब वाकिफ हैं, सब जानते भी हैं। आयुर्वेद, हमारा जो प्राचीन विज्ञान है आयुर्वेद, उसे भी बहुत बढ़ोतरी मिली है, भारत में ही नहीं विश्व भर में भी। I met Honorable Prime Minister for the first time when he was then Gujarat Chief Minister. This was during my 100th Test match in Ahmedabad. So I played it so happened that my 100th Test match was against Sri Lanka in Ahmedabad. And he was the chief guest felicitating me on my 100th Test match by the BCCI and also by Gujarat Cricket Association. So that was the first meeting. And he invited me and my family over to his residence in Gandhinagar. So that was very special. It was very private. So I had the good opportunity to interact with him during that period. And it felt as though I have come to someone who I have known for a long time to their house, and that's how he made us feel. So I think that's the speciality of Honorable Prime Minister. My family, my wife and my young son and children were there, so they were really comfortable, made comfortable in his house. I spent almost half an hour to 45 minutes with him, and after the interaction, he was a wonderful host. We felt really special because he literally came outside, dropped us till the car, and then bid goodbye. I mean, that to me is really fresh in my mind, and it's remained so for so many years, the kind of interactions that I've had with him. Being the Chief Minister of Gujarat, I've had many interactions. Then subsequently, when he became the Honorable Prime Minister of our country, even then I've had many interactions. So every time it's been very personal. He recalls everyone's name in the family, he recalls my wife's name. And I think that to me is very special. And even here, when I met him in Bengaluru last year during the air show, he had come down, and some of our cricketers, friends were also there. And the interaction again was very similar. Spoke about cricket, spoke about how India has become a force in the international cricket arena. And I also spoke to him about a sport technology that I have developed, and I gave him a sticker, and I told him this is a part of the Make in India, Startup India program, and I'm as a startup, I'm also a part of that. So he was very happy, and he took the sticker with him. Someone who travels so much, meets so many people, has so many things to do in a day, yet he recalls every interaction that one has had, and that makes you very special whenever you meet him. The other interactions that I have had, officially once, whilst I was the Vice Chairman of the Karnataka State Wildlife Board, we went as a delegation. He was then the Gujarat Chief Minister. So we went to make a request for our Mysore Zoo, the Gujarat government, to give Karnataka the Asiatic lion to come from Junagadh Zoo. Whenever these kind of meetings happened, he was abreast of all the things that we would discuss, and he would himself point out, and I recall his knowledge on wildlife, on everything else, conservation. He was talking that. So you felt that it was not like there were other officers who were
actually interacting. He was the one who was discussing all of that. Whenever there's an opportunity to congratulate the Prime Minister, I've always done that, and his office, the PMO, receives those calls and then conveys the message. If sometimes I get a call back, which is amazing. You don't even expect that, and it's wonderful to see that India is now grown in stature in the sporting world. Of course, cricket has certainly come a long way, but even other sports have come a long way. I'm really happy that we are hopefully hosting an Olympics very soon. I got to know that the Honorable Prime Minister mentioned about the incident in West Indies where I went and bowled with a broken jaw. He mentioned during his Mann Ki Baat, I think during the exam time for students, saying you need to be determined and you need to be focused, and irrespective of what pain one has, the focus needs to be on achieving your goal. I think that was the message that he wanted to give, and I was very honored when the Prime Minister of the country takes an incident in your career as an example to inspire young students. It felt really special. It was a very pleasant surprise. On my 50th birthday, my wife secretly reached out to a lot of people, cricketers, my cricketing colleagues, then some of my contemporaries who I played against, players from Australia, West Indies, England, so all my contemporaries. And then she also reached out to very important people in India. And I never expected that I would receive a personal letter from the Honorable Prime Minister. So it's a very special feeling to receive a personal note from the Honorable Prime Minister on my 50th birthday. And he's done quite a lot for Gujarat cricket. His knowledge, not just about the administration, but also about the game itself, about players. He would ask, so what is this player doing? Why is he not in this team? So those kind of questions really sort of amazes you, because someone who's so busy and he has a lot of other things to, more important things to handle, but yet he was still keeping track of what was happening in the cricketing world, certainly makes you feel really nice about it. And the best part was, it's not just about reaching out or congratulating when teams win. I think what I've seen of him is also when in sport you have disappointments. It's not always that you go and get a trophy all the time. So even during those times, he's been with the sportsmen. And that to me is a very special feeling, because it's not just reaching out to athletes when they win. It's also about reaching out to athletes when those disappointments have happened in sport. And that has been the hallmark of our Honorable Prime Minister, where he has reached out to athletes. I think the confidence that an athlete gets when your Prime Minister calls or interacts just before an event, saying, come on, all the best, we are with you, the whole nation is with you, it gives you a tremendous boost in confidence. And he's done that consistently throughout. I've seen that, personally with me, and also with not just cricket, but also other sports. And that is very special, because when your Prime Minister, before any tournament, interacts with you, or whilst, like I mentioned, it's not just about congratulating athletes when they win, but also putting an arm on their shoulder when things don't go well is equally important. And we saw that when India lost to Australia in that final in Ahmedabad, in that 50-over World Cup championship in cricket. But immediately after that, he was in the dressing room putting an arm on the shoulder of players. And then we saw how India responded in the T20 World Cup, went on to win the World Cup. So I think these moments remain a lasting impression on players and on athletes as well. And with Khelo India coming through, like I mentioned, hopefully India will
be able to win the bid for the Olympics in 2036, and that will be a very special feeling. And this is something that he's had as a vision from the start whenever I've had those interactions with him. So it'll be a dream come true when that happens. You know, whenever you interact with him, I've always sort of kept that it resonates with the kind of person that he is that he makes you feel absolutely comfortable. You don't feel sometimes heads of state, head of the nation, you always are a bit nervous, but with him he makes you comfortable, gets very personal, he talks to you like any family member and remembers all the meetings that you have had previously and goes back to those and sort of asks how has that progressed. So I think these kind of interactions certainly makes him very special, and the energy that he has, may he continue to have that kind of energy. I mean, nobody can really believe that someone can be so energetic with the kind of sort of time that he needs to give with running the nation. So it's wonderful to see him at the helm, and I wish him all the very best. A very, very happy birthday from the people of New Zealand to you. We have a very long friendship between our countries, between New Zealand and India. We have a long creative friendship where we have worked together on films. We have a long history in New Zealand and a tradition of filmmaking, as do your people. And I'd like to thank you for the co-production treaty that we have that we would love to use more. कीर्ति और सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध मां भारती के सच्चे सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अस्तित्व आपको दीर्घायु प्रदान करे। पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नया लक्ष्य देखने को मिला है। भारत की विदेश नीति में कई नए आयाम जुड़े हैं, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या वसुधैव कुटुंबकम जैसा एक नारा जो कि एक सिविलाइजेशनल नारा है, जिसमें कि एक समाहित विश्व की कल्पना की गई है, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बनाना, जिसमें कि 100 से अधिक देश अब जुड़ गए हैं। अगले 20 सालों की जो हमारी समस्याएं आने वाली हैं या वैश्विक माहौल में जो बदलाव आएगा, उसके लिए भारत तैयार हो रहा है। I would like to extend my heartfelt wishes to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. Sir, may you be blessed with good health, immense strength and greater wisdom to continue guiding our nation with your unwavering vision. In the last 10 years, under your inspiring leadership, the pace of progress has been incredible. आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर भारतीय गर्व से सिर ऊंचा करके चलता है। अपने देश पर गर्व, अपनी पहचान पर गर्व और उस सम्मान पर गर्व जो भारत को पूरी दुनिया में मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के इस पावन अवसर पे मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने शिक्षा जगत में जो चमत्कारिक नीतियां लेकर आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से, उसमें जो मूलभूत परिवर्तनों की बात की गई है, वो सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा को केवल जीविका का माध्यम न मानकर आपने उसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ा है। बड़ी प्रेरणा की बात। जब पहली दफ़ा उनसे साक्षात्कार हुए थे, उन्हें सब पता था हमारे बारे में। मेरे परिवार के बारे में पूछा, पिताजी के बारे में पूछा, ताहिरा की सेहत के बारे में पूछा, फिल्मों के बारे में पूछा। This personal connect of his with the people he interacts with makes him extremely special. So here's me wishing him good health and happiness. Happy 75, Modi ji. I met first Honorable Prime Minister Modi ji, I think in Gujarat. I don't know exact year, but ये हमारा फुटबॉल स्टेडियम अहमदाबाद में ओपनिंग सेरेमनी था, और दिस वाज अ प्राइवेट स्टेडियम ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड ट्रांस स्टेडिया।
तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिला एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फुटबॉल का बारे में काफ़ी नॉलेज था उनके साथ प्राइम मिनिस्टर जी को। एंड देयर वर कपल ऑफ अदर स्पोर्ट्स स्टार्स भी, क्रिकेटर्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल सभी को टाइम दे के हम लोग अच्छे से मिल सके उस समय। अंडर 17 जो हम लोग का वर्ल्ड कप किया था मेंस का, उस समय आई थिंक देयर वाज अ ह्यूज इनकरेजमेंट। उनका जो सपोर्ट था, मैं हमारा प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल जी के साथ उस समय फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, तो उनके साथ मिला। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मोदी जी ने काफ़ी सपोर्ट करके, और सबसे सफलता अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया ने उस साल होस्ट किया। इतने वर्ल्ड कप्स हुए थे अंडर 17 का, बट इंडिया में जो सक्सेस हुआ वाज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ अंडर 17 वर्ल्ड कप। जो लास्ट ओलंपिक खेला, आई थिंक इंडिया वाज द बेस्ट सपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ एथलीट्स को जो सपोर्ट था, एक्सपोजर से लेके फाइनेंस, जो इक्विपमेंट से लेके ट्रेनिंग, आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टेड एथलीट्स इन द ओलंपिक्स इन टर्म्स ऑफ फंड्स एंड एक्सपोजर। फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट है और मोदी जी हर एक कंट्रीज को ट्रैवल करते रहता है, एंड जितने भी कंट्रीज जाता है वो कंट्रीज में स्पेशली फुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट ही होता है, चाहे यूरोप जाए, चाहे आप गल्फ कंट्रीज ही जाए। आई थिंक वो लेके उनको काफ़ी जानकारी रहता है कि क्या कौन सा कंट्री में क्या स्पोर्ट्स है और कौन स्पोर्ट्स आइकॉनिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो जब भी नॉर्थ ईस्ट में आता है और जब भी कोई बात रखना है तो नॉर्थ ईस्ट का स्पोर्ट्स पर्सन को लेके वो हर समय बात रखता है उनका स्पीच में। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन को एक एक it makes them feel proud, it makes them feel happy, but बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट और मोटिवेटेड रहता है। प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इतना बिजी रहता है, उनका डिप्लोमेटिक से लेके इतना जो काम रहता है, आई थिंक दे आर सो बिजी, बट टू रियली सी कि एक कोई भी स्पोर्टिंग, बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, जो इंडियन एथलीट्स है, इंडियन टीम्स कर रहा है, उनका भी वो जिक्र करके अवेयरनेस रख के, रिजल्ट्स रह के क्या हुआ, तो माइन्यूट डिटेल्स उनके पास इंफॉर्मेशन रहता है और फॉलो करता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। हम लोग तो सोचते हैं अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उनको इतना मालूम नहीं चला ये स्पोर्ट्स में क्या होगा, लेकिन जब एथलीट्स के साथ बात करता है तो एक्चुअली काफ़ी स्कोर लाइन से लेके डिटेल्स जब बात करते हैं तो आई थिंक एथलीट्स को भी शौक हो जाता है कि अरे इतना डिटेल्स में आपको नॉलेज है और जानकारी रख रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। पोर्चुगल में मोदी जी के साथ आई थिंक अंडर 17 वर्ल्ड कप जब हो रहा था उनके साथ मैं अवार्ड लिया और 1-2 मिनट का बात करने को मिला। तो फुटबॉल लेके उस समय मोदी जी ने खुद बताया कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल फ्लो सपोर्ट दे रहे थे अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए, और हमारे लिए भी आई थिंक एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना फर्स्ट था इंडिया के लिए, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप वही मेंस का, सीनियर्स का तो बहुत ही बड़ा होता है, वो तो बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड है, बट अंडर 17 का ऑर्गेनाइज करना हम लोग के लिए फीफा इवेंट फर्स्ट था। उनको जानकारी था कि फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट है, सारा दुनिया एक ही स्पोर्ट खेलता है, वो फुटबॉल। एंड फुटबॉल का स्टार्स मेसी से लेके क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेके काफ़ी नाम जानकारी था, और उनको ये, उनका भी एक इंटरेस्ट था कि एक इंडिया भी एक सुपर पावर बने फुटबॉल में। और उनको जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टोरी, जब वो पोर्चुगल गए थे तो जब उधर का आई थिंक लोग से मिला तो उन्होंने काफ़ी बात किया कि इंडिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो वो लोग भी थोड़ा आई थिंक सरप्राइज भी हुआ, खुश भी हुआ, बिकॉज वो लोग नहीं सोचा होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप और पोर्चुगल में तो फेमस है बट इंडिया में भी इतना पॉपुलर है। और जब प्राइम मिनिस्टर ही खुद बोल देता है उधर का डिप्लोमैट्स और लोग को, तो आई थिंक दे वर आल्सो क्वाइट सरप्राइज। स्पेशली स्पोर्ट्स में आई थिंक मोदी जी इज बीन वेरी वेरी इंकरेजिंग एंड वी सीन थ्रू आउट। यस, खेलो इंडिया स्कीम है, ऑब्वियसली इसको और स्ट्रेंथन करना है, एंड होपफुली आई थिंक विद द काइंड ऑफ इंटरेस्ट सपोर्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्पोर्ट्स हम लोग आगे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली अंडर लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये ओलंपिक्स भी वी आर ट्राइंग टू होस्ट ओलंपिक्स इन इंडिया। I think these are something which are very very important for sports in India, and hopefully we will be able to host Olympics and hopefully FIFA World Cup as well. But at the same time, I think we as sports person and people involved with sports ko bhi, we need to start delivering good results so that at least the government and the prime minister ko aur I think उत्साह और जोश आएंगे इसको और आगे ले जाने के लिए। आई वुड लाइक टू विश ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी
happy 75th birthday, and I hope you keep inspiring everyone, especially sports person, but every countryman across India and across the world. So thank you so much for all your support to every one of us. So wishing you a very happy birthday.